everyone, welcome back to Learn Then Code supported by Newton School. So in the previous three videos of data structures and algorithm playlist, we are covering about stack data structure. So first we learn about the principle of stack, what are the basic operations that we use in stack. And in the second and third video, we learn about how you can implement your stack using data structures like arrays and linked lists from scratch. But of course, if you are participating in any contest or if you are giving your online assessment test that you are not going to implement stack from scratch in that particular test, right? So in this particular video, we are going to cover about how you can implement functions of stack using STL, which is standard template library in C++. So how you can use stack STL and how you can solve problem using that. So without any further delay, let's get started with the video. So in this video, we are going to cover about 6 basic functions of stack. The first one is push, where we push an element into the top of the stack. The second is pop, where we pop the top element of the stack. The third one is to check if the stack is empty or not. The fourth one is to check the size of your stack. And the fifth one is to find the top element. And the last one is swap, which is basically exchanging the content of one container, in our case exchanging the content of one stack to another. So let's get started and try to implement all these functions. Let's first create an instance of stack. So here I am passing an argument of int, which represent that the type of my stack will be int. It will be similar to if you are implementing stack using vector, then you will define the type of your vector, right? If whether it's a int vector, whether it's a string vector or any kind of other data structure vector. Similarly, in case of linked list, if you are implementing stack using linked list, then the type of your data member, which stores the value of your data, will be the type here. So I'm typing in, that means the stack is of int type. Now there can be other parameters as well. For example, if you want to implement this stack using vector internally, then you can pass here vector. If you want to implement it using list, then you can pass it list. Or if you want to implement it using deck, then you can also pass it here. And by default, the default implementation is using deck only, which is double-ended queue. That means you can insert or delete from both ends. So double-ended queue is a very appropriate data structure for implementing stack because it's dynamic in nature. So by default, it's deck only. So let's name this as S only. And now let's try to push some element here. First, I'm pushing 1, then 2. Then let's see out the size of my current stack. So S dot size, then see out top element, S dot top. Now let's pop some element and then let's see if our stack is empty or not. So see out S dot empty. Now let's try to run our code. As you can see, first we have see out the size of our stack. So it is 2 because we have pushed 2 elements, 1 and 2. Then we have see out the top element, which is 2 in our case. And then we popped 1 element and then we see out is our stack is empty or not. And the answer is false because it still has 1 element. We have done pop operation only once and we had 2 elements. So now we have a 1 in our stack. Let's try to see out that as well. Let's see what is the top element right now. It should be 1, right? Now, as you can see, 1 is there. Now let's try to implement the swap function as well. So for this, I'm creating another stack of state type, which is int. And let's name it temp. And what I'm going to do is I'm randomly going to push some elements in this stack. So the size of temp stack is 2. And as we have popped 1 element in our initial stack, so the size of our S stack will be 1. So let's try to use swap function. So all you need to do is pass temp as a parameter in the swap function. Now let's see what is the size of our initial S stack, S dot size. Or to be more sure, we can even print the top element. So see out S dot top. Let's see. So as you can see, the size of our S stack is 2, which should be 1 if we haven't performed this swap function, and the top element is 5, which was a part of our temp stack. So as you can see how the swap function works, it
it basically exchange the content of one stack into another. So we have now implemented push function, pop function is empty, size, stop, and swap. Now let's try to solve a problem using Stack STL as well. So you will have a better command on it. So the question is to check for balanced brackets in an expression. Given an expression string, write a program to examine whether the pair and the order of all the brackets which are mentioned in your input are correct in expression or not. So you have to check whether the expression is valid or not. So इसका algorithm कैसे हो सकता है? Let's first understand that. Let's say this is the expression which is given to us. अब इसमें हमें क्या चीज चेक करनी है कि अगर एक ब्रैकेट का हमारे पास ओपनिंग साइड है, ओपनिंग ब्रैकेट है, देन देयर शुड बी एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एज वेल, एंड उसके बीच में जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो भी सेम रूल को फॉलो करे. सो लेट्स से इफ दिस इज द ओपनिंग ब्रैकेट, देन देयर इज अ क्लोज ब्रैकेट एज वेल, एंड जो इंटरनल है उसमें भी जो जो अब हमारा ब्रैकेट आएगा उसका भी ओपनिंग एंड क्लोज होना चाहिए, एंड the string should be balanced. So let's say अगर ये हमारा एक स्ट्रिंग है, एक एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो वैलिड. तो इसमें हम क्या चीज चेक करेंगे? हमारे पास ओपनिंग है, हमारे पास क्लोज भी है, इसके बीच में कोई हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड वन. हमने मूव ऑन करा, हमने यहाँ चेक करा ओपनिंग है, यहाँ चेक करा क्लोज्ड है, बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वैलिड. सिमिलरली हमने थर्ड केस के लिए भी चेक करा, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दैट मीन्स द कंप्लीट स्ट्रिंग और द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज वैलिड. नाउ ये हो गया हमारा कि जब हमारे दो ओपनिंग और क्लोज्ड ब्रैकेट्स के बीच में जो स्ट्रिंग था हमें उसके लिए भी चेक करना था. सो दिस इज फर्स्ट केस. नाउ इन दिस सेकंड केस दैट वी हैव सीन इज यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड वन. दिस वाज द सेकंड केस. अब इनवैलिड केसेस कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे अगेन एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड देन यहाँ पे हमारा ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है, सो दिस इज नॉट वैलिड. एंड ये हमने कैसे चेक करा? हमने सबसे पहले चेक करा ये हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल है, हमने इसकी इंटरनल स्ट्रिंग को चेक किया, इंटरनल स्ट्रिंग में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. नाउ हम अब इसके ऊपर सेम लॉजिक लगाएंगे, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, दैट मीन्स द कंप्लीट स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड. सो अब हमें ये चीज अपनी स्टैक के लॉजिक से इंप्लीमेंट करनी है. हमें बस सिंपली क्या चेक करना है? लेट्स से दिस इज आवर स्टैक एंड दिस इज आवर स्ट्रिंग जो हमें चेक करनी है वैलिड है या नहीं है. तो हम क्या चेक करेंगे? इफ इट इज द ओपनिंग ब्रैकेट देन पुश इट इन आवर स्टैक. सो सबसे पहले हमारा ये एलिमेंट आया, हमने पुश किया, देन ये एलिमेंट आया, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने पुश कर दिया, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग, सो हमने पुश किया. अब इससे हमें क्या पता चल गया कि अभी हमारा कौन सा ब्रैकेट है ऐसा टॉप का जिसे सबसे पहले क्लोज होना है, राइट? तो जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हम चेक करेंगे क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ब्रैकेट ओपन था, एंड अगर ओपन था इट शुड बी एट द टॉप ओनली, क्योंकि जो सबसे टॉप पे है हमें सबसे पहले उसे क्लोज करना होगा, राइट? सो ये हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमने चेक किया क्या जो टॉप एलिमेंट है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं है. सो यहाँ पे हमारा वो वाला सेम ब्रैकेट था, तो हमने इसे पॉप आउट कर दिया. सिमिलरली हमारे पास अब स्क्वायर ब्रैकेट आया, हमने चेक किया, दिस इज ऑल्सो मैच, तो ये भी हमने पॉप आउट कर लिया. एंड सिमिलरली हमारा कर्ली ब्रैकेट आया, ये भी हमारा मैच हो गया, दैट मीन्स ये भी हमारा क्लोज हो सकता है, जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो सकता है, इसे भी हमने पॉप आउट कर दिया. अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे? क्या हमारी स्ट्रिंग में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, दैट मीन्स हम सारे जितने भी ओपन ब्रैकेट्स थे उन सबको क्लोज कर चुके हैं, एंड जो हमारी स्ट्रिंग है दैट इज ऑल्सो कंप्लीट, हमने पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया है. दैट मीन्स जो हमारी एक्सप्रेशन था उसमें जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स थे वो सारे क्लोज हो गए हैं, एंड हमने सारे ब्रैकेट्स को ट्रेवर्स कर लिया है. सो दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं इनवैलिड का. लेट्स से हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट था, देन दोबारा ओपनिंग, देन क्लोज एंड देन दिस वन. सबसे पहले तो हमारा जो साइज ऑफ द स्ट्रिंग है इट शुड बी इवन ओनली. काफी सिंपल सा लॉजिक है, इफ देयर इज अ ओपनिंग ब्रैकेट देन देयर शुड बी अ क्लोज ब्रैकेट. सो जो हमारा साइज है वो हमारा इवन होना चाहिए. सो ये तो हमारा पहले ही इनवैलिड बन जाएगा. बट अगर हमारे पास कोई लेट्स से इवन साइज का ही स्ट्रिंग आता है, लेट्स से ये है अगर हमारा स्ट्रिंग, तो ये कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है? लेट्स से दिस इज अ स्टैक, हमने चेक करा ये हमारा ओपनिंग है, हमने इंसर्ट किया, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग, इंसर्ट किया, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग, इंसर्ट किया, दिस इज क्लोजिंग. नाउ
तो अब हम चेक करेंगे टॉप ऑफ आवर स्टैक. नाउ इट सेज कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट जो है, जो टॉप से हमें मिला है, वो कर्व्ड ब्रैकेट है, राइट. बट जो हमारा क्लोजिंग है वो स्क्वायर है. सो ये हमारा पेयर नहीं हो सकता. जैसे ही ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुई, वी विल रिटर्न दैट द स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड. सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड केस. आई होप आपको एल्गोरिथम समझ आ गया होगा. हमें बस ये चीज चेक करनी है. इफ इट इज अ ओपनिंग ब्रैकेट, स्टैक में पुश करो. इफ इट इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो टॉप एलिमेंट से चेक करो कि वो उसका पेयर बन सकता है या नहीं बन सकता. अगर बन जाएगा तो हमें पॉप करना है. अगर नहीं बनेगा तो हमें रिटर्न इनवैलिड करना है. And at the end, we have to check if we have traversed the complete string and there is no element left in our stack. Then we can return true. अगर कोई element stack में present है, that means हमारा कोई एक ऐसा bracket है जो open हुआ था but close नहीं हो पाया. So उस case में भी हम invalid return करेंगे. Now let's try to implement it using Stack STL. So let's start implementing it. So let's start implementing the code. So first we are going to have a string, input string of expression. And let's take a valid one right now. And then we are going to have a isValid function where we are going to pass this expression and see out if the expression is valid or not. Now for implementing this function, the return type should be bool. Input parameter is string, which is the expression. And then here we are going to have a stack of type char. Now we are going to iterate over the input expression. So you can have a for loop for that. For int I equals 0, I less than s dot length, and then I plus plus. Here we are going to check if the character is an opening bracket or a closed one. So if, okay, there should be expression. If expression of I is equal to this or this or this, then we are going to push it in our stack, expression of I. If not, so in the else part, that means it's a closing bracket. We are going to check the type of the closing bracket. If expression of I is this one and the top element of a stack is not equal to this, then return false, right? That means हमारा opening और closing bracket match नहीं कर रहा है. And similarly, we have to write this condition for every bracket. If all these conditions are false, that means हमारा जो opening and closing bracket है वो match कर गया है. So we are going to do a pop operation. And at the end, we are going to check return s dot empty. If it's empty, then return true. If it is not, then return false. Now let's try to run this program. It's complete and it should return true in this case. As you can see, it's 1. Now let's try to have some invalid string as well. So this one should return false. And we can even have a check on the size of the input string as well. If it is odd in nature, then it should be false by default. And it was an odd string, so it's returning false. Now let's have some even invalid string as well. So here also, as you can see, the answer is false. Now let's have some different types of valid string as well. So let's say this is valid in nature. So it should return true. So as you can see, the answer is 1. So this is the complete program. First, we have checked if the input character is opening bracket, then we are pushing it into the stack. And if it is a closing bracket, then we are checking the top of our stack. And if it is matching with and if they are matching, then we can pop out all the element. And at the end, we can check if our stack is empty or not. So I hope you like the video. And of course, STLs are very important to learn because in programming contest, you are not going to implement all the data structures from scratch, right? So it's very good to have a good command on STL. So in previous videos also, we have covered about STLs in C++, where we learned about sequence containers like vectors and lists. So if you want to check out that video as well, I will link it into the description. And also don't forget to enroll into the full stack web development course provided
provided by Newton School, which is a great course to start learning web development in zero upfront fees. They will provide you live classes, mentorship, projects, and they will also help you to get a right job in web development. So the link is there in the description box. You can use that link, or you can directly enroll from their website as well. So I hope you like the video, and if yes, do subscribe to our channel. Thank you for watching this till the end.